Vehicle release alert. Gadi release alert. Release of vehicle. Lots. Under which provision it has been seized? NDPS. NDPS. You have applied for release in the court below. बोलिए. May I, my lord, leave to mention lordship criminal writ for Come prepared. Come prepared. Go Criminal to the writ brief, for- come prepared. वहाँ से रिजेक्ट हो गया था लॉर्डशिप. ये तो आपसे पूछा इतनी देर क्यों लगा है? सॉरी लॉर्डशिप. वहाँ से रिजेक्ट हो गया है. लॉर्डशिप. I have gone through the brief. लॉर्डशिप. Statement must be correct. Protection of life and property of the petitioner. Lordship had shown this I petitioner. am had already shown the- getting those cases listed. Lordship, the harvesting is going on. Anti-social elements of the village and Musselman, they are harvesting. I had shown, in fact, Lordship. The difficulty will be you just go through your brief. My Those cases where there is any land dispute. lord, there is no land dispute in this case, Your Lordship. The title is very clear. It is the name of my wife. Anyway, But it will come anti-social because I element am is- giving priority to these cases. Give the list. Give this list. Please, Lordship. I am giving priority. उसमें देख लीजिए. Providing security वाले में. Urgency, Lordship, that daily now today also they are harvesting. 5 बीघा में से 2 बीघा कर चुके हो, जो therefore the urgency, Lordship. So if they are not stopped, Lordship, then entire क्या exercise. किया जाए तो 5 बीघा में 2 बीघा काट लिया. 5 बीघा काटने में आजकल हार्वेस्टर मशीन जो होता है वो दिन भर में 25 बीघा काट देता है. तो है एक बार में। मशीन से नहीं मैनुअली तो जब तक आप मैनुअली क्या करेगा, जिसको काटना होगा वो मैनुअली काटेगा. वो तो मशीन गिरा देगा. और आजकल कोई मैनुअली काटता है? अब मैनुअली बहुत महंगा हो गया है. नहीं लॉर्डशिप से रजिस्ट्रार जनरल साहब का यहाँ से लेटर भी गया है एसएचओ गो थाना को, लेकिन तब भी कोई एक्शन नहीं ले रहे. द पिटिशनर हैड रिक्वेस्टेड ऑनरेबल द चीफ जस्टिस, तब रजिस्ट्रार जनरल साहब का लेटर गया. बट इन स्पाइट ऑफ दैट नो एक्शन इज बीइंग टेकन बाय द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन. लॉर्डशिप May I permit to mention this, my lord? Matter relates to release of vehicle, my lord. My lord, ये FIR. का वकील. Yes, my lord. ये Just all. tell me under which act it has been. My lord, लर्नेड कोर्ट बिलो से भी ये हम वहाँ फाइल से किए. कौन से एक्ट? माय लॉर्ड, इसमें ऑलरेडी केवल 8 लाख इस गाड़ी से रिकवर हुआ. कोई एक्साइज का कुछ भी रिकवर नहीं हुआ. और मेरे नाम आपसे से हमने गाड़ी. सिर्फ एक सवाल किया ना कि कौन से एक्ट में है. आप सिर्फ बोलिए ना एक्साइज का मैटर है. माय लॉर्ड, एक्साइज केवल एक्ट लग गया है. एक्साइज का रिकवरी नहीं है. my ठीक lord. है, एक्साइज का रिकवरी नहीं है, एक्ट लगा हुआ है. केवल पैसा रिकवरी है. my lord, गाड़ी से मेरा देखते हैं, दीजिए. mention, my lord. Yes. A quashing Oh, my of FIR under section 7 of the EC Act, my lord. Yes. Matter है 2018 का, my lord. Till date the charge sheet has not been submitted, तो cognizance भी नहीं हुआ है हुजूर. और हम प्राइमा फेसी मेरे ऊपर कोई केस नहीं बनता. रिलीज ऑफ A quashing of FIR, my lord. पासिंग ऑफ FIR. सॉरी. 2018 का मैटर. चार्ज शीट हैज नॉट, मतलब चार्ज शीट हैज नॉट बीन सबमिटेड. We have cases of 2017 still pending. My lord. You can see the list. The charge sheet, my license. 2017 quashing matters. In quashing matters, I am telling every day. I don't know why should I repeat. My every time. PDS license has been cancelled on this very ground. Just you are mentioning for priority hearing. I am not hearing your case on merit. In quashing matters, unless you say that there is any coercive action against you during pendency of your anticipatory bail application, I am on bail. 82, I am on 83 bail. has been issued. I will not entertain quashing matters to be considered on merit in priority. That is not possible. Simply not possible. One bench of criminal writ application. That is. So many kind of cases are there. So please चार्ज wait शीट for भी नहीं some. दिए 2018 से 2004 साल से. I can understand your predicament. There are many cases, not only under EC Act, even under the IPC. Investigation are pending for decades. Yes, fully. This is the case of quashing matter, my lord, under section 130. फिर आप भी वही बहस कीजिए. NI Act का under the provision 142A है, my lord. The वकील police साहब has no power to वकील register. साहब एक चीज बताइए. जब आपने कोर्ट का ट्रेंड समझ लिया, जब आपने देख लिया कि हाँ कोर्ट कौन से मैटर में क्या व्यू ले रहे हैं, फिर भी आप क्यों इंटरटेन इस तरह से जबरदस्ती करते नहीं, हैं? 142A प्रोविजन है जो पुलिस को पावर इसमें नहीं है FIR करके. उन्होंने जबरदस्ती FIR करके उस आदमी को जेल भेज दिया. तो उसमें हम अभी करेंगे नहीं. उसी पर अगर पुलिस वॉशिंग ही है ना.
FIR का क्वाशिंग है। क्रॉसिंग मांग रहे हैं ना, अभी क्या बताया आपके पहले वाले वकील साहब को? इसमें कि ओनली कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस इन द कंप्लेंट केस, हाँ, मुश्किल द है, पुलिस हैज नो पावर इन वेरी डिफिकल्ट, इसीलिए मेंशनिंग नहीं सुनना चाहिए। इनको जो बताना चाह रहे हैं ये समझने को तैयार नहीं हो रहा है। एक रिवीजन है हुजूर। हुजूर मेरा भी क्वेश्चन ही है, लेकिन फिर- इलेक्ट्रिसिटी का हुजूर केस है और पिटिशनर बोनाफाइड डोमेस्टिक कनेक्शन और एग्रीकल्चर कनेक्शन दोनों था और उसको डिसकनेक्ट कर दिया गया है क्रॉसिंग है ना, जी। और एक को समझाया, दूसरे को समझाया, तीसरे आप मैं आई परमिटेड In fact, it's criminal petition, Your Lordship, 1232 of 2022. It is for direction to the respondent for providing security on payment basis, personal life and liberty. He is an up-and-coming entrepreneur in Begusarai. His application was recommended by from Thana level to district magistrate level, but it was rejected by Chairman Special Security Committee Bihar, Your Lordship. When was it rejected? It was rejected, Your Lordship, last month itself. It's running on in the consolidated list, Your Lordship. रिमिशन ऑफ कन्विक्शन के लिए जो 20 साल से कस्टडी कंप्लीट हो गया है हुजूर। 20 साल से कस्टडी हो गया जी 20 साल Actual हो गया है कस्टडी में हुजूर। हुजूर के यहाँ क्रिमिनल रीट 2948 सीरियल पर लगा क्या हुआ है। रेमिशन का मैटर है? जी हुजूर। तो आपका एक्चुअल कस्टडी 20 साल हो गया? जी हुजूर। क्या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है? जी और कौन सा ऑफेंस है? 302 में हुजूर। मतलब क्या मल्टीपल मर्डर्स हैं और जी क्या? नहीं, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं, सिंगल वो डिफेंस में हुजूर। दूसरा का एक जयनंदन मंडल है, शिवनंदन मंडल है, तो ये रेमिशन वाले केसेस में इसमें काउंटर आया आपका? जी नहीं, अभी तक नहीं दिया। नहीं आया ना? जी नहीं आया हुजूर। तो एक और मैटर मेंशन हुआ था कोई, है ना? तो उसी में टैग कर दी। उसी में टैग किया, उसी के साथ लगेगा। लॉर्डशिप परमिटेड टू मेंशन। लॉर्डशिप, ये 2018 का क्रिमिनल रेट है। इशुएंस डायरेक्शन टू रिस्पोंडेंट टू रिस्टोर एंड प्रोटेक्ट द पोजीशन ऑफ द पिटिशनर पोजीशन ऑफ द पिटिशन। ओवर प्लॉट। हाँ, वो उनका एक लैंड क्या था। सिविल कोर्ट है क्या? सिविल कोर्ट है कि आप क्रिमिनल रीट फाइल कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन ऑफ पोजीशन मांग रहे हैं? क्यों क्रिमिनल रीट फाइल कर दिया आपने? लॉर्डशिप, पुलिस नहीं जा पा रही है वहाँ, और उनको डायरेक्शन हुआ था, डायरेक्शन फॉलो नहीं कर कहाँ डायरेक्शन किसने दिया था? वहाँ लोअर कोर्ट में। वो एक्सक्यूशन केस है। लोअर कोर्ट ने किस प्रोसीडिंग में डायरेक्शन दिया था बताइए? थोड़ा इनका खुल करके क्यों नहीं बताते? पूरा पढ़ के नहीं आते हैं ब्रीफ को। इनका एक प्लॉट था, उस पर डिस्प्यूट राइज हुआ था। इनको वो प्लॉट बाद में अलॉट हो गया और उसके बाद पुलिस को बोला गया, डायरेक्शन दिया गया उसी में कि उनको पोजीशन दिलाया जाए। पुलिस वहां पे कोई एक्शन नहीं। किसने डायरेक्शन दिया? कौन से प्रोसीडिंग में डायरेक्शन दिया? नहीं पता। कोई टाइटल सूट हुआ, उसका एक्सक्यूशन में गए आप, आपके फेवर में डिक्री हुआ, क्या है टोटल? इसको हम कर दिया। हाँ, तो यही तो समस्या हम समझ रहे हैं। आप लोग को इतने दिन में समझाते रह गए कि जब मेरे यहाँ आइए ब्रीफ के साथ तैयार होके आइए, ये सोच करके आइए कि हो सकता है मेंशनिंग में ही आपकी बात सुन करके अगर ऐसा लगे तो हम उसको इमीडिएटली डिस्पोजल कर सकते हैं। बोलिए जी हुजूर। वेस्टेज होता है। क्रिमिनल रिवीजन अगेंस्ट कन्विक्शन है हुजूर, 498। 6 महीना लगभग रह गया है इसको हुजूर। अगर कितना है सेंटेंस? 2 साल। 2 साल। देखिए, बोलिए। क्रिमिनल रीट हजूर फाइल किए हैं, उसमें सिर्फ प्रेयर है मेरा कि री इन्वेस्टिगेशन के लिए डीआईजी के यहाँ हम एप्लीकेशन दिए हैं विथ एविडेंस, सिर्फ उसको डिस्पोजल कराने के लिए डायरेक्शन दे दिया जाए। डीआईजी को री इन्वेस्टिगेशन का पावर है क्या? रिप्रेजेंटेशन वहाँ री फाइल इन्वेस्टिगेशन मांग रहे हैं ना। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन री इन्वेस्टिगेशन एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन? री इन्वेस्टिगेशन हजूर। री इन्वेस्टिगेशन तो ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स कैन कंसिडर। री इन्वेस्टिगेशन ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स कैन कंसिडर। Police has, the DIG can direct for further investigation if the material comes, suggesting that a further investigation. हजूर गलती हो गई है हमारे पास ब्रीफ हजूर। क्या मांगे हैं आप? एविडेंस बहुत सारा आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन मांगे या री इन्वेस्टिगेशन मांगे?
फर्दर इन्वेस्टिगेशन मांगे हैं हजूर। ब्रीफ में क्या लिखा है आपने? हजूर इसमें तो री इन्वेस्टिगेशन लिखा है ना? जी है। वेट कर लीजिए थोड़ा, हम थोड़ा वेट कर लीजिए और इसको बढ़िया से समझ भी लीजिए। यू विल फाइंड देयर आर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, यू विल फाइंड जी डिफरेंशिएटिंग बिटवीन फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड री इन्वेस्टिगेशन। नॉर्मली इस चीज को समझना चाहिए। हुजूर एक क्रिमिनल रिवीजन है हुजूर मेंटेनेंस की खिलाफ हमें अब पिटिशनर पंछीलाल हुजूर हमारे अगेंस्ट में एक्स पार्टी पिटिशनर इज पंछीलाल। वेरी गुड। एक्स पार्टी ऑर्डर पास हो गया हुजूर, हमें एफआईआर 1 है उसके हमारे तो विरुद्ध। आप तो नाम के मुताबिक गायब हो गए, तो कैसे होगा? बीमार थे बहुत दिन से, हमसे एविडेंस लगाए। पार्टी तो आपने करा लिया अपने अगेंस्ट। हमने उसका प्रोसेस सब इशू हो गया हुजूर। बूढ़ा आदमी है, 75 वर्ष का उम्र है हुजूर। तो जो इनको मिला होगा मेंटेनेंस, वो भी तो कोई बूढ़ी ही होंगी। और हम तो एविडेंस लाए हैं कि हमारी पत्नी। एविडेंस कहाँ से लाएंगे आप जब एक्स पार्टी है तो? नहीं, हम कहे कोर्ट में ना इत्तला दिए हैं कि हमारी पत्नी 10-12 साल से पूर्व से गायब। ये लेडी जो है, जो एफआईआर हो रही है, वो फिक्टिशियस लेडी है। यही बढ़िया है, तो अच्छा किया। आप एफआईआर किए थे कोर्ट में? न, वहाँ मौका हम पिटीशन भी देखिए ऑर्डर को। कहाँ पिटीशन आपने दिया कि आपकी पत्नी गायब है? वहाँ इत्तला किए हैं हम कोर्ट में, लोअर कोर्ट में किए। उसके बाद कितना मेंटेनेंस चला हुआ है? मेंटेनेंस हुआ है 3000 रुपये। अरे सर, 3000 में क्यों आप? अगर सुन लिया जाता है लेडीज सुन फिक्टिशियस। तो लेंगे। कब का केस है? ये 2021 का है। 20 का है ना? आप देखिए लिस्ट पर कब तक कैसे जा रहा है। जी देख लेते हैं। देख रहे हैं ना? जी वहाँ आपके जैसे जो प्रोसेस नेग्लेक्टेड, सुन लीजिए, आपके जैसे जो नेग्लेक्टेड वीमेन हैं, जी मतलब आपके केस में जो इन्वॉल्व है, जी, उनका 2016 अभी हमने लगभग फिनिश कर दिया जैसा दिख रहा है। जी हुजूर। नहीं तो 16 के सारे केसेस पेंडिंग थे। जी एक डेट पर भी सुनवाई नहीं हुई थी। तो 16, 17, 18 3 साल लगभग अब हम समाप्त करेंगे। क्यों? 3 साल हम लोगों ने टेकअप कर लिया ना। 16, 17, 18 तो थोड़ा आप इंतजार कीजिए। प्रोसेस इशू हो गया, पकड़ लेंगे, पुलिस हमको पकड़ लेगी। 50% वाला फॉर्मूला में आइए आप। वही 50% पे कीजिए। सुन लिया जाता हुजूर। प्रायोरिटी हियरिंग देंगे अगर 50% आप पे कीजिएगा। करेंगे हुजूर। क्या करेंगे? जो ऑर्डर होगा हुजूर का तो सीरियस होगा। कितना सीरियल है बोलिए? कंसोलिडेटेड लिस्ट में बोलिए ना सीरियल। सीरियल है 2000 पर है, लिखे 2000 पर लिखिए। सीरियल में लिखिए दिस मैटर हैज बीन मेंशन्ड फॉर अर्जेंट हियरिंग, फुल स्टॉप, क्लाइंट काउंसिल फॉर द पिटिशनर सबमिट्स। आपको इंस्ट्रक्शन है ना कि आप 50% देंगे? नहीं, इसका इंस्ट्रक्शन नहीं है। तब फिर क्यों मेंशन करते हैं? अभी एक दिन पहले सुन लिया जाता जरूर फिक्टिशियस लेडी है, हम यही इंक्वायरी करवा दिया जाता है कि लेडीज में हमारी। यू आर वेस्टिंग माय टाइम। सॉरी, जस्ट नाउ यू सेड कि यू आर रेडी टू पे। ये पॉइंट पर क्यों बात को फिर इधर से उधर आप करते हैं? पॉइंट पर हम नहीं लिए हैं। नहीं लिए हैं तो क्यों अंडरटेकिंग दे रहे हैं? क्यों बोल दिया आपने? कोर्ट को क्या लुभाने के लिए बोल दिया आपने? सॉरी माय लॉर्ड, सुन लिया जाता है। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग। प्रोसेस प्लीज। प्रोसेस नहीं, एकोमोडेट करने का मतलब ये नहीं होता। आप इस तरह से नहीं। ये पॉइंट पर पूछ लेते हो, जो पैसा देंगे मैं आपको कॉस्ट लगा दूंगा अभी। नहीं, सॉरी माय लॉर्ड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओबलाइज माय लॉर्ड, योर एवरी वर्ड हैज सम। माय लॉर्ड, इस पॉइंट पर इंस्ट्रक्शन नहीं लिए। एनी वर्ड कमिंग फ्रॉम योर माउथ हैज गॉट सैंक्टिटी। माय लॉर्ड, इट शुड बी टेकन एज सैक्रोसेंट। माय लॉर्ड, लूजली बोलते हैं आप कोर्ट में। पहले कहते हैं कि हाँ हम दे देंगे, और उसके बाद जब ऑर्डर लिखाना शुरू करते हैं। उस पॉइंट पर नहीं पूछे थे हुजूर। क्यों स्टेटमेंट दिया आपने? हम तो आए थे हुजूर का। जाइए, अब टाइम वेस्ट मत कीजिए प्लीज। मिलॉर्ड में मेंशन किया, ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं होता है। सॉरी माय लॉर्ड। हाँ, बहुत ज्यादा बोलने से नहीं होती है। बोलिए मिलॉर्ड इन दिस केस मिलॉर्ड। उनको बोलने दीजिए ना, आपके बगल वाले को। इंजर्ड विटनेस का एग्जामिनेशन कराने के लिए हम 311 सीआरपीसी में पिटीशन दिए, वो रिजेक्ट किया गया। जब फाइनल चार्जशीट विटनेस हैं आप? ना, चार्जशीट विटनेस नहीं है, लेकिन इंजर्ड विटनेस। हाँ, अभी आपको जब ट्रायल समाप्त हो गया तब आपको सुनवाई किया। बताइए। मिलॉर्ड इन दिस केस इन्फॉर्मेंट हैज आइडेंटिफाइड अननोन बॉडी एज ए डॉटर ऑफ इन्फॉर्मेंट मिलॉर्ड। सेम डेड बॉडी वाज सेंट टू PMCH मिलॉर्ड। व्हाट डू यू वांट? फॉर पोस्टमार्टम मिलॉर्ड, it has been found मिलॉर्ड that dead body is of male person. What do you want? Prosecution and quashing of the FIR मिलॉर्ड। I am not entertaining question.
Not entertaining person. My lord, it has been found, my lord, that dead body is of That will amount to male person, my lord. hearing- That prescription is falsified, my lord. So, in और that, आप लोग लगता है कि मेंशनिंग बंद ही करवाइएगा। no, my lord. नहीं, बहुत लिबरल My lord, given आपको तरीके से हम mentioned- समझा रहे हैं हमेशा कि जो चीज ऑन प्रिंसिपल एक बार बोल दिया कि इसको नहीं इस तरह से इंटरटेन करते हैं हम, उसमें आप रोज आज आप चौथे आदमी हैं। Bless my lord. You are the fourth lawyer. Next week may be given liberty. No. क्रिमिनल डिवीजन अगेंस्ट कन्विक्शन है मैम, क्रिमिनल डिवीजन अगेंस्ट कन्विक्शन है। जी। 1 महीना की सजा इसमें, 1 महीना 1 महीना 2500 रुपया। तब जेल में ही सरेंडर करेगा तो समय बीत जाएगा, यहाँ चढ़ने में खत्म हो जाएगा, कहीं केस वहाँ सक्सेस हो जाएगा, कोई अथी नहीं। तो इसको चला Exemption file कंसोलिडेटेड लिस्ट पर है, क्रिमिनल डिवीजन है ऐसे 549 क्या बात हो गई कि 1 महीने की सजा हो गई? 1 महीना का उसका कन्विक्शन है, 2500 रुपया। तो इसको सुन लिया जाता है वहाँ पर। क्या फाइल किए हैं? एग्जाम्पशन फाइल किए हैं फ्रॉम सरेंडर? नहीं, क्रिमिनल डिवीजन फाइल किए हैं। क्रिमिनल डिवीजन का रूल पता है? हाईकोर्ट रूल्स, हाईकोर्ट रूल्स पता है? रिवीजन अगेंस्ट कन्विक्शन अगर आप आ रहे हैं, हाईकोर्ट रूल्स चेक किया है कि उसका क्या रिक्वायरमेंट है? पहला नहीं पता है ना? नहीं पूछिए कि नहीं अपने कलीग से जरा बैठ करके, या करने के बाद दोपहर में जरा चाय पीजिएगा तो टेबल पर कुछ चर्चा कीजिएगा, कोई सीनियर आपको बता दे। सरेंडर कराने के बाद यहाँ जो पढ़ेंगे 1 महीना की आप- सजा हुई तो समय बीत जाएगा। आप फिर बहस में लग गए, यही समस्या है, ना यही समस्या है। आपको मैंने पहला लाइन बोला, कुछ आपको मैंने रेमेडी भी बता दिया उसमें, फिर भी आप कैच नहीं कर पाए, फिर भी आप कैच नहीं कर पाए। क्या बोला हमने आपको? क्या बोला हमने? हमने पूछा आपसे कि क्या आपने कोई एग्जाम्पशन फाइल किया है? नहीं कैच कर पाए आप ना। अब जाके इसको डिस्कस कीजिएगा अपने सीनियर कलीग से। तो क्या बोला जज साहब ने? क्यों बोला कि एग्जाम्पशन फाइल किया है? क्या ठीक है? एक सीरियल 508 पर क्रिमिनल डिवीजन लिस्टेड है 508 सीरियल पर, उसमें हमने प्रेयर किया था, जो डीवी एक्ट का मामला है, और नोटिस हुआ था, उसको जो टाइम कोई फिक्स कर दिया गया। चौबे जी उसमें क्या अर्जेंसी है जो टाइम फिक्स? अर्जेंसी है हुजूर की, उसमें मेंटेनेंस वगैरह भी अलाउ हुआ था, वो भी नहीं दे रहा है, और एक हाउस के लिए हमारा प्रेयर था, वो भी नहीं अभी तक मिला है। मेंटेनेंस नहीं दे रहा है आपको? नहीं दे रहा है। कौन से साल का है? यह 2019 का। कौन सा मैटर है वो? सिटी वाला है क्या? जी सिटी वाला जो है कवर था, उसको सुनेंगे, उसमें बहुत सा इश्यूज है। आई हैव कंसीडर्ड योर केस ऑन द अर्लियर ओकेजन, सुनेंगे, दैट विल रिक्वायर हियरिंग। It's a matter of 420, Your Lordship, and the police is not registering the FIR, and that's why this criminal. Why are you coming to this court directly for registration of FIR? For direction, Your Lordship. Why this court To the should? police. No. What is the law on this subject? If the police is not registering FIR, then what are the requirements to be followed? We have sent the representation to all the superiors authority, Your Lordship. But No, I'm still- not. I'm not looking for a general statement. You have sent representation to all the superior authority. Yes. What is the law on this subject? 156, Civil Code 156. 3. You know. Then Your why Lordship, didn't you we apply also for give that? direction, Your Lordship. In Why due- did not you apply for that? Why did you give a wrong suggestion to your client, wrong advice to your client? You are a lawyer, you are not an ordinary person. You are an officer of the court. If somebody comes to you for an advice, you are not required to look into your own personal gains and benefits. You should have given him or her correct advice that this is the law. There are so many judgments. In Sakri Vasu case, the Honorable Supreme Court has specifically observed in one of the paragraphs that the High Court
should discourage filing of applications under Article 226 directly. It's not that High Court cannot in an appropriate case direct for registration of FIR. Yes, High Court can. But the High Court should discourage it because the procedures are provided under CRPC. Go before the regular courts under CRPC. You are burdening the system of this High Court. Withdraw it and file appropriate application. Please. Your name, please. Let me ask my senior, then I will withdraw. Your senior has not authorized you to take a decision. To not withdraw the case. Not to withdraw the case. All right. Take an advice from your senior and come back to this court. And please tell your senior that if you do not agree for this, then follow me. The Honorable Judge would like to hear from you why this should not be dismissed immediately, because the court has already given much time to your case in course of mentioning itself. जाइए बुला के ले आइए. Yes. Matter related to release of victim gar milo. Under which act? Immoral Traffic Act. In this case, my lord, or your victim gar. Under which act? Immoral Traffic Act. Gar है appear before this. So have you applied for that in? जी my lord, both gar appear before this court. छोड़िए ना गर्ल, आपने अप्लाई किया था रिलीज के लिए नीचे अदालत में, क्या हुआ? रिजेक्ट हो गया? हाँ रिजेक्ट हो गया हुजूर. यहाँ एक पर्सनल अपेयरेंस हुई लड़की आई थी चैम्बर में हुजूर, और हुजूर के द्वारा मेडिकल रिपोर्ट और समस्तीपुर एसपी से रिपोर्ट मांगा था. अभी तक हुजूर ना आया नहीं हुजूर, इसी के लिए हुजूर दे दीजिए. Yes. Yes, my lord, for mentioning of one criminal revision matter of 2012, my lord. The petitioner, who is an practicing advocate. Criminal revision of 2012. Yes, my lord. The crux of the case is that one judicial magistrate has filed a complaint case in his own court, and on the same day he has taken cognizance against the petitioner, alleging that one client has made a complaint against that judicial officer before this honorable court, and in that complaint, my lord, this honorable court has taken decision against him and found him guilty, and he has been demoted, my lord. So he has taken cognizance of an offence and summoned the advocate. Yes, my lord. Not only that, he has alleged that that client has not made a complaint. Why this revision is pending since 2012? It has been admitted, my lord. Oh, it has been admitted. Yes, my lord. And further proceeding? Has been stayed till January 2013 only, my lord. Sir, the case is proceeding there? No, the case is not proceeding, but the court is putting pressure that since those period has expired. So he wants to proceed with the case, my lord. If he would fix any date in that matter, then you come to this court. Any because presently the hearing matters are not getting fixed. My lord. I'll have to fix some particular day for hearing. My lord. Presently too many admission matters are there and urgent matters are there on the board. My lord. So wait for some time. If the court will fix any date in that matter, then you come to this. My lord. Yes. जो सीरियल नंबर 46 है, 2 बार टेकअप हुआ था पर स्टेट टाइम लेते चला गया और नीचे चाहता 8 सीरियल से 46 पे चला गया. आप कितना सीरियल पर चाहते हैं आपका? नहीं हुजूर, टेकअप 2 बार हुजूर ने किया था, क्योंकि एक बार 500 बार किए हुजूर. आप इतने लकी तो हैं कि 2 बार आपका टेकअप हो गया. 500 बार उन्होंने लेकर के मेरा. आपसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट लोग हैं ना जिनका केस आज तक टेकअप नहीं हुआ. हुजूर उन्होंने 500 बार लेके मेरा ये कर दिया. ठीक है ना, आ जाएगा अपने. क्योंकि उसमें हुजूर देखिए कल फ्राइडे है, कल ऑनलाइन हियरिंग में ये ऑर्डर्स वाले केसेस नहीं रहेंगे. ठीक है, आपको ट्रेंड अगर मालूम हो तो ठीक है, बता देते हैं. ऑनलाइन में टेकअप कल एडमिशन मैटर्स ही रहेगा. ठीक है, तब तक हमारे लिए कोई नहीं. हमारे लिए समस्या है. हमारे लिए समस्या ये है कि जब मैटर टेकअप होगा तो टेकअप होने के बाद या उसके पहले ही मालूम हो जाएगा मुझे कि आधे से ज्यादा केस एडजॉर्न हो. मेरा भी वैसे में ऑनलाइन हुआ था 2 फ्राइडे पहले. हाँ. उन्होंने पासवर्ड ले लिया, अगले दिन आया नहीं. क्या करें बताइए? वो नीचे चला गया. तो आप लोग अगर अपने वर्क कल्चर को नहीं सुधारेंगे तो क्या होगा? जी. हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ चाह रहे हैं इम्प्रूव करना, आगे बढ़ना.
तो हम लोग का मतलब आप नहीं है क्या उसमें? नहीं नहीं बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो ये आदत तो छोड़नी पड़ेगी आप लोगों को कि जब डेट फिक्स करेंगे तो पास ओवर कर दीजिए, एडजॉर्न कर दीजिए, और जब नहीं टेकअप होगा तो मेंशन कीजिएगा कि 46 जो है ले लीजिए। 8 से 46 में टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट। जी जी बिल्कुल। Everybody has to introspect. मेरी पूरी फैटर्निटी। हाँ, I have to also look into my conduct. You have to also look into your conduct. Yes sir. That is true. Yes. Obvious. Be ready tomorrow. Obvious. Under heading for orders, item number 1. May I please your sir? Yes. Yes, Mr. Superintendent of Police. Sir. Did you Here is the get the entire case diary? Sir, yes. Please show me. Serial line copy. Like it. आपको चाहिए लाइन नंबर।
ये किसने किया ये तो कल नहीं था, ये किसने ये 1 लगाया है पैराग्राफ के पहले? कल आपने लगाया? किसने लगाया? नहीं मैंने नहीं लगाया है सर। किसने लगाया ये? सर मिस करके SHO से मिलवाया है सर इसको। This 53 has been made 153 now. सर 1 मिस कर गया था सर, वो फेंट How can you do it? How can you do it? वो मिस कर गया था या आपने जो है ये सब पेजेस बीच में लगा दिया? जेरोक्स है सर, मुझे लगा These are Xerox copies. सर ये डिस्ट्रॉय रिकॉर्ड में नहीं था सर, फट गया था पूरा पेज सर उतना, तो उसका जेरोक्स लगाया है। It's a serious matter, Mr. Superintendent of Police. कल जो ये नहीं था 153 लिखा हुआ, आपने 1 सब में ऐड कर दिया। How can this amounts to interpolating the records? नहीं सर, SHO ने सर फेंट कर गया था। How SHO can do it? Who has written this case diary? You are a police officer. You are a superintendent of police. Don't you understand? Don't you understand? अगर हम आज कोई ऑर्डर लिखेंगे तो कल क्या कोई और उसको करेक्ट कर देगा? लगा ये गलती हो गई थी। इतना कैटेगरिकली इसने 53, 54, 55 लिखा है और तो मुझे इसमें इंक्वायरी करना होगा, इसका रिकॉर्ड मंगाना होगा। इसका ओरिजिनल रिकॉर्ड वहाँ लोअर कोर्ट में रहता है, तो मंगा लीजिएगा। ये आपने बहुत बड़ी गलती की है। जब ये केस डायरी कल प्रोड्यूस हो गया कोर्ट में, हमने इसको पेरूज कर लिया, देख लिया, तो आप इसमें कैसे ऐड कर सकते हैं ये? Yes, Mr. Khan. My lord. Has he consulted you before doing it? I only see the mother that mother. He asked me not. He will be prosecuted for interpolating the records. Sorry sir. You will be prosecuted, I assure you. Sorry sir. Sorry sir. How can you do it? क्या हो गया है आप लोगों को? You do not understand the sanctity of the records. Sorry sir. तो कल हमने इसको देखा, आपको हमने बताया सारी बातें। Sir. And today, in order to support your stand, you have changed the paragraph number. This does not form part of the original records. ये आपने कार्बन कॉपी में कर दिया, ये ओरिजिनल रिकॉर्ड्स में तो है नहीं। वो तो नहीं होगा, वो तो वहाँ कोर्ट में जमा है। तो ओरिजिनल रिकॉर्ड कुछ और दिख रहा है कोर्ट में, और यहाँ आपने कार्बन कॉपी में ये डाल दिया। अब यहीं पर जब आपसे सवाल करेंगे ना, तो फिर आपको बुरा लगने लगता है। सॉरी सर। साहब कोर्ट में जो है, सॉरी सर, इस तरह से बोला गया। आपको कोई ट्रेनिंग भी होती है या वैसे ही बस? नहीं करना चाहिए था, मिस्टेक हो गया सर। हर चीज में मिस्टेक ही बोलते हैं ना आप। सॉरी सर, गलती हो गई है सर। हर चीज में मिस्टेक होता है। फोटो कॉपी कैसे आएगी उसमें? एक ऑर्नामेंटल वर्ड आपने सीख लिया, सॉरी सर। सॉरी इज नॉट पैनेसिया फॉर ऑल इल्स। सॉरी सर, कभी नहीं, ऐसी गलती नहीं होगी सर दोबारा। इसका रिकॉर्ड्स मंगवाइए पूरे केस का। जी लिखिए, ये तो गलत कर दिया आपने। I had handed over you this copy not for changing the paragraphs. By mistake. तो कॉल कर लिया, रिकॉर्ड कॉल कर लिया। ट्रायल नंबर है सर, ट्रायल नंबर बताइए। ट्रायल नंबर होना चाहिए। चेंज करने का भी होता है, कोई अगर गलती होती है तो उसका तरीका होता है।
मुझसे भी गलती होती है, पूछ के करना था सर। तो गलती होती है तो ऐसा नहीं कि कोर्ट में कुछ बोले और पीठ पीछे कुछ ऑर्डर में लिख दिया। उसके लिए हम कोर्ट में केस को लाते हैं, फिर से लॉयर्स के सामने डिस्कस करते हैं कि साहब ये गलती हुई है, इसको सुधार करने की जरूरत है। सर ये गलती हो गई है सर, सॉरी सर। आपने तो रिकॉर्ड्स को, जुडिशियल रिकॉर्ड्स कुछ और है और आपने यहाँ पर कुछ और प्रोड्यूस कर दिया। कॉल कर लीजिए जरा, उसका ट्रायल नंबर नहीं है, नहीं दिख रहा, उसमें भी नहीं दिख रहा। पीएस केस से कॉल कर लिया जाए, वहाँ रिकॉर्ड उसमें मिल जाएगा, सीजीएम के यहाँ पेंडिंग है। फाइनल फॉर्म एक्सेप्ट हो गया इसमें? हुजूर कब एक्सेप्ट हुआ है? मुझे भी नहीं मालूम। कुछ और चीजें मैं इसमें पॉइंट आउट करना चाहूँगा हुजूर, विद योर परमिशन। यस, ये इनका जो सेकंड काउंटर एफिडेविट या सप्लीमेंट्री एफिडेविट मान के चलें, वो 25 पेज नंबर 25 का देखा जाए उसमें लास्ट पैराग्राफ में है, पेज नंबर 25 पे लास्ट पैराग्राफ में, लास्ट पैराग्राफ में पढ़ देता हूँ। उल्लेखनीय है कि इस कांड के अभियुक्त अजीत कुमार सिंह उर्फ पुप्पू सिंह एवं अशोक सिंह द्वारा दिनांक 18/11/22 को बसंतपुर लकड़ी नवीगंज ओपी थाना कांड 61/2020 में माननीय न्यायालय सिवान में आत्मसमर्पण किए हैं। तत्पश्चात उन दोनों अभियुक्तों को बसंतपुर नकड़ीगंज ओपी थाना कांड संख्या 336-20 पे 9/8/2020 में रिमांड हेतु माननीय न्यायालय में सिवान में अनुरोध पत्र दाखिल किया गया, लेकिन इन्होंने 61/20 जो हमारा केस है उसमें रिमांड नहीं मांगा। 61-20 में सर सरेंडर ही किया है सर वो। ठीक है, 61-20 में उसने सरेंडर किया। सर आप ये बताइए, आपके कंडक्ट को क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं कि नेम्ड एक्यूज था वो? सर बमबारी किया था या गोली चलाया था? गोली चली। गोली चलाया था उसने इनके हाउस पर। अच्छा। इन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि साहब सो एंड सो हैड बीन देयर, वो लोग ऐसा कर रहे थे। आप उनको अरेस्ट नहीं कर पाए। जब ये कोर्ट आए और कोर्ट ने यहां से आपको कॉल अपॉन किया, तो 1-2 डेट देखने के बाद जब दबिश बढ़ी कोर्ट के द्वारा, तो अब इनका तो कहना है कि आपके कोलैबोरेशन से उन्होंने सरेंडर किया, लेकिन अगर सरेंडर अपनी मर्जी से भी उन्होंने किया तो आपका नेचुरल कंडक्ट क्या होता था साहब? नेचुरल कंडक्ट क्या होना चाहिए था आपका? जब वो सरेंडर किए तो आप उनको पूछताछ नहीं करेंगे? सर करेंगे ना? तो आपने क्यों नहीं उनको लिया रिमांड पर? क्यों नहीं आपने 1 दिन के लिए भी कस्टडी मांगा उनका? ये आपका नेचुरल कंडक्ट नहीं है। एंड दैट गोज टू स्ट्रेंथन हिज सबमिशन कि आप एक्यूज्ड को कोलैबोरेट कर रहे हैं उसके साथ, और आप उसके मेल जोल में हैं, आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंड कोर्ट कैन सी दैट। सर रिमांड पर ले लेते हैं सर। अब सब तो आपको क्या, हम यहाँ आपको समझाने के लिए बैठे हुए हैं कि आपको कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, क्या करना चाहिए। नेम्ड एक्यूज था इसीलिए। आप इनकॉम्पिटेंट है ना फिर सर। इट मीन्स यू आर टोटली इनकॉम्पिटेंट to handle the case or to control your subordinates, to train your subordinates। हर मामले में आप इसका मतलब इनकॉम्पिटेंट हो गए। सर नेम्ड एक्यूज था इसीलिए रिमांड पर नहीं लिया। क्यों नेम्ड एक्यूज को रिमांड पर नहीं लेते हैं? क्या क्या बोलिएगा आप, क्या क्या बोलिएगा एसपी साहब? अरे कुछ तो अपनी वर्दी का लाज रखिए। प्रमोट होकर के बने कि डायरेक्ट हैं? नहीं सर प्रमोट होकर बने। तो ऐसे ही करते करते एसपी तक आप पहुंच गए। ऐसे ही करते करते आप, इसी तरह से इन्वेस्टिगेशन करते करते आप एसपी रैंक तक पहुंच गए। आपने वो पद हासिल कर लिया जिससे जिले का कप्तान कहला गया। और आपकी हालत यह है कि हर बात पर आप सॉरी कहते हैं, हर बात पर कहते हैं कर लेते हैं। नेम्ड एक्यूज्ड है इसलिए उसको लेने की जरूरत नहीं है, उससे पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। किस गाड़ी से था? जिन्होंने कल क्या बोला,
कि आज तक आपने व्हीकल नहीं सीज किया, आज तक आपने वो आर्म्स नहीं सीज किया। I mean, I'll have to record very strictly something which you may not like. हुजूर एक और इनका मैं दिखाता हूँ, पेज 14 पे पैराग्राफ डी में जो इन्होंने दिया है, जिसमें फाइनल फॉर्म सबमिट किया है, ये बाढ़ राशि का डिफॉल्केशन। हाँ, वो मुझे याद है, जो सर्किल ऑफिसर ने केस फाइल किया था, मिस्टेक ऑफ फैक्ट बताते हैं, उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स बता करके क्लोज कर दिया। उसका जरा सा हम उसका ब्रीफ कर। इसमें जितने आईओज हैं, जो कंसर्न एसएचओ हैं, डीएसपी हैं, अप टू एसपी, सबका कंडक्ट क्वेश्चनेबल है, ऑब्जेक्शनेबल है, और इसका सबका जो है ये एक फ्रेश इन्वेस्टिगेशन इनके कंडक्ट का भी होना चाहिए, वो ईओयू से। क्योंकि और एक और इन्होंने किया है कि एक और केस था, जब ये काउंटर फाइल कर रहे थे, सुन लेते हैं एक जब ये काउंटर फाइल कर रहे थे, जल्दीबाजी में आपने देखा है कभी हमको? नहीं देखा है ना, तो वेट कीजिए ना। यस, जब इन्होंने अपना काउंटर फाइल किया है हुजूर, तो इन्होंने 5 केसेस को दिया, और एक और इम्पोर्टेंट केस था जो इन्होंने डिलिबरेटली उसमें उसको सप्रेस कर दिया कि काउंटर में इन्होंने नहीं फाइल किया। वो भी मैंने कल हाईलाइट किया था। yes. ये एफआईआर नंबर है 16422 डेटेड 20/4/22 पीएस बसंतपुर। जब ये लोग एफआईआर नहीं रजिस्टर्ड कर रहे थे, तो द कंसर्न कंप्लेनेंट वेंट टू द सिविल कोर्ट, ऑब्टेन एन ऑर्डर अंडर 156(3) in complaint case number 11962021, and then out of that this FIR has been registered. तो जब इनको काउंटर फाइल कर रहे थे, उस दिन तक इनके पास ये सारे रिकॉर्ड्स थे, उन्होंने इसको क्यों नहीं लिखा, ये भी इनको बताना पड़ेगा कि आखिर इन्होंने क्यों नहीं लिखा। He was supposed to it will show that he is deliberately suppressing the facts before this honorable court, and this is happening everywhere in the Bihar. This is a clear political, police and criminal nexus. बात हरवंशा का बोलते हैं। How do you say it is political? Political है हुजूर, ये क्योंकि इसमें एक मिनट इनको बोलने दिए ना, आप पुट हिम। इसमें वहाँ के लोकल विधायक से लेकर सबका इन्वॉल्वमेंट, और ये खुद भी मुखिया रह चुके हैं, इनका भी ये मुखिया है, तो जन रिप्रेजेंटेटिव तो ऐसे खुद भी हो गए, तो पॉलिटिकल तो ये खुद भी हो गए। इनकी मदर भी मुखिया रह चुकी हैं, इन लोगों का पूरा बैकग्राउंड पॉलिटिकल है। किनका? एक्यूज्ड का। एक्यूज्ड का। जो सरेंडर किए हैं उनका। जी 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 जी। Yes. बोलिए। First question, my lord, he is raised, my lord, कि FIR filed by the CO, my lord, he did not, my lord, one this fact, my lord, submitted the charge sheet. There are 20-25 persons, my lord, had taken the, my lord, excess money, 4,000, somebody 6,000, somebody 5,000. When the FIR was lodged, my lord, all the persons returned the money, my lord. Police examined, there are 13-14 persons, my lord, had taken the, my lord, who are not affected by the flood, but he got the, my lord, same thing, my lord. Then, my lord, all the persons have returned the money, my lord. After that, my lord, they have filed the submitted charge sheet, my lord. So, it was a case of mistake of fact then? But, my lord, that is the, my lord. How it was a case of mistake of fact? There are 20... Those who were... Mr. Khan, my lord, I will record your statement, otherwise also it is getting recorded in the court proceeding. You said that those 16-17 persons who were not affected, they had received the money, my lord, but then they returned it. my lord, return. Therefore, this case was based on a mistake of fact. Meaning thereby that today somebody takes an attempt to get public money unlawfully. The moment a case is lost and he can sense that a case is going to be lost, he returns the money. Then it is not a case. If this is your understanding of law, then in all cases of misappropriation, where
public officers are swindling and siphoning the public money, they will immediately come with an argument that all right, I have returned the money. They are not public officers taken, my lord. Private persons has taken, my lord, that money, my lord. So all of them have. How they may be differentiated? If any person has duped the government, has taken benefit of the government money, and which is happening every day, which is happening every day under the government schemes, you go and find out that how all these rahats, all these money are going in the account of the people who are not really entitled for that. There is no check on that. मुश्किल से अगर 100 ऐसा होगा तो 1-2 मुकदमा होता है. आपके पास है क्या लिस्ट की कितने लोग थे जिसने कितनी बार पैसा निकाला शौचालय बनाने के नाम पर? मालूम है आपको? नहीं मालूम है ना? Go and talk to the people. जो एक व्यक्ति ने 4 बार पैसा निकाला होगा इसलिए कि बिकॉज करप्ट ऑफिसर्स आर देयर, दे टेक देयर कट्स, और वो कमीशन लेकर के और पैसा बांटते हैं. मालूम है आपको? नहीं मालूम है क्या? आप इस समाज में नहीं रहते हैं. तो आपके ऑफिसर ने जब एक केस हुआ, सर्किल ऑफिसर ने केस फाइल किया, तो आपने उसको क्लोज कर दिया बोल करके कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट है. हाउ इट इज ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट? यस मिस्टर एसपी. सर सर्किल ऑफिसर ने रिपोर्ट दिया था कि सबने जमा कर दिया, उसी आधार पे मेरे पहले का अनुसंधान है सर. तो सर्किल ऑफिसर ने आपको रिपोर्ट दिया, ठीक है कि जमा किया, तो आपके ऑफिसर क्या कहेंगे उसको कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट का केस है ये? It's a case of embezzlement, maybe a case of temporary embezzlement, but it is a case of temporary embezzlement at least. इसीलिए तो लोग इतना खुल करके कर रहे हैं सब गलत सलत. उनको मालूम है कि क्या होगा, जिस दिन फंसना होगा उस दिन पुलिस वाले हैं ना, कुछ मिला जुला करके काम चल जाएगा. I mean, I am constant to say all these things. जिस तरह का केसेज आ रहा है उसमें सिवाय इसके और कुछ समझ में नहीं आती बात कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है. सारे केसेज रीओपन करने होंगे आपको, सारे केसेस रीओपन करने होंगे. ये पब्लिक मनी है, इसका अगर घोटाला हो रहा है, इसमें हो सकता है ये सर्किल ऑफिसर ने जो केस फाइल किया उसके पहले वाले जो सर्किल ऑफिसर होंगे वो भी इन्वॉल्व होंगे उसमें, ऐसा हो सकता है. और कहीं न कहीं से ये पैसा जमा करा करके और ये कोशिश किया गया कि साहब चलिए इस केस को क्लोज करा दीजिए. आज हम ऑर्डर लिखा रहे हैं, अभी इसको हम फिर इस मैटर को रखेंगे इन द नेक्स्ट वीक. आप जरा सारे केसेस का जितने चीजें डिस्कस हुई सबका रिकॉर्ड्स लेकर के आइए, सबका रिकॉर्ड्स लेकर के आइए, सो दैट आई कैन टेक ए कंप्लीट व्यू ऑफ द मैटर. समझ रहे हैं ना? जितने केसेस हैं सबका रिकॉर्ड्स लेकर के आइए. लिखिए. Mr. Khan, I'll keep it in the next week. My lord. But I'll briefly record what has transpired in course of hearing. 2 weeks at least, my lord, may be granted. SP, my lord, इनको आना खुद भी, my lord, तो maybe next week only.
Next week only. My lord. And देखिए My lord. My lord. जितना डिस्कशन हो गया उसके बाद बहुत ज्यादा इनको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इनको सिर्फ रिकॉर्ड्स My lord. My lord. लेकर के और देखना है और कोर्ट को My lord. असिस्ट करना है. My lord. This writ application has been filed seeking issuance of an appropriate writ, writs, directions to the official respondents to complete investigation and file its report before the court of competent jurisdiction. In Basantpur PS case number 194 of 2012 dated 3/8/2012, bearing GR number 2829/12, registered under section 363/365 IPC, and Basantpur PS case number 61 of 20 dated 13/2/2020, bearing GR number 570 of 2020 under section so and so, para 1 se le लीजिए. Next. After hearing learned counsel for the petitioner, this court granted time to SP Siwan on 21/9/2022, to file a comprehensive counter affidavit giving details of the action taken so far with all supporting materials. Full stop. This court called upon him to swear an affidavit himself after supervising both the cases. Full stop. A further direction was issued that in case the accused persons are found absconding, then what action has been taken against them be also indicated in the counter affidavit. Next. On 21/10/2022, this court was informed that in Basantpur PS case number 194 of 2012, the investigating agency did not conduct a proper investigation to unearth the prosecution case of kidnapping of the son of the informant. And recently, a final form has been submitted on 30/4/2020. Whether this has been accepted, Mr. Singh? I have no idea. Any notice was issued to the informant? No. No notice. Never. Full stop. In the final form, it is stated that the occurrence has been found true, but there is no clue. Full stop. As regards the second FIR, this court was informed that the petitioner has given a specific name of the accused who are involved in the alleged occurrence, but because they are influential persons, the investigating agency is not taking any action.
Full stop. On the said date, Mr. Irsad Learned AC2, SC1, Mr. Irsad Advocate AC2 SC1 informed this court that he could not inform SPC1 about the order dated 21/9/2022, as a result of which the counter affidavit could not be filed. Full stop. He prayed for a short adjournment and this court granted the same, fixing the case on 7th November 2022 under the same heading. Full stop. It is thus to be noted here that for 1 month completely no information was sent by learned counsel for the state to SPC1 regarding the order of this court. Next. On 9/11/2022, a counter affidavit was filed showing the dismal performance of the investigating agency. Full stop. This court has dealt with the same in detail in its order dated 9/11/2022. Full stop. After finding that the FIR named accused in Basantpur PS case number 61 of 2020 was named accused in several cases of serious nature and still the police was not arresting the accused. And the submission of learned counsel for the petitioner that the accused person is so dreaded that he has established his nexus with the police and he may be found freely moving inside the police station, this court having considered the seriousness of the matter called upon the Superintendent of Police Shivan once again to show his efforts to this court in arrest of the said accused, and he was directed to be present in person with the records of all the cases, including the 4 cases mentioned in the order dated 9/11/2022. Full stop. Next. Thereafter, the case was taken up for consideration only yesterday, that is 30/11/2022. Full stop. The SP Siwan carried with him an incomplete copy of the case diary of Basantpur PS case number 194 of 2012, which was showing that there was no case diary written
during the period 2015-2019 for a period of about 4 years, 7 months. Full stop. This court pointed out to the Superintendent of Police that while the case diary written on 10/2/2015 is up to paragraph 115, thereafter the case diary starts from 6/9/2019 and the paragraph numbers are showing from 53 onwards, which was totally incoherent and would not inspire confidence of this court. Full stop. The SP, Shivan, was granted time to arrange his records and address the court on the next day. Full stop. Next. In the yesterday's hearing, this court was informed that how many accused have surrendered? 3. All 3, sir. That all the 3 named accused in Basantpur PS case number 61 of 2020 have surrendered in the court below on 18/11/2022. एक 11/11 है कि बाकी 2 18/18 In between 11/11/2022 and 18/11/2022. Full stop. Client counsel for the state, for the petitioner, however, strongly argued that they have surrendered in collaboration with the local police, which fact may be which may be found from the conduct of the police in not seeking remand of those accused for interrogation. Full stop. Client counsel for the petitioner has once again submitted today that it is difficult to understand how on surrender of the 3 named accused against whom there were serious allegations, the police will not seek their remand to reveal the truth and to further facilitate seizure of the vehicle and the arms which were used in the alleged occurrence. This conduct of the local police has been sought to be placed before this court in order to strengthen the argument on behalf of the petitioner that the local police is in collaboration with the accused persons. Full stop. This court has been informed that the accused persons are politically strong and have their political nexus, which has resulted in the police not acting against them. Full stop. Next, when this question was put to the SP Siwan as to whether it is a natural conduct of an investigating agency not to seek remand of the accused persons who were absconding so far and have surrendered after the order of this court, the SP Siwan has stated that he would now seek remand of the accused in police custody for interrogation. यही कहना है ना आपका? सर
नेक्स्ट। Another case, my lord. अभी रुकिए, अभी हम ऑर्डर लिखाते हैं तो समझते हैं ना, ऑर्डर लिखाते समय हम कंजूसी नहीं करते, ठीक है। इसलिए कि वो कहीं भी पढ़ने के बाद ऐसा नहीं मालूम हो कि साहब कुछ, और आपको भी ये नहीं बोलने का मौका मिले कॉफी टेबल पर कि देखिए ना ये केस इस पॉइंट को बहस किए थे, हम लोग कोर्ट के बाद याद नहीं, जज साहब जो है छोड़ दिए, इस पॉइंट को नहीं डील कर सकते थे। कोर्ट के बाद हम लोग सब याद नहीं रखते। आप क्या रखते नहीं रखते, आपका मतलब आपसे नहीं है। नहीं, हम लोग कैसे वकील को वकील चर्चा करते हैं ना जजमेंट पढ़ने के बाद, हाँ चर्चा होता है, करते हैं कि नहीं, कि देखिए ये पॉइंट बहस किए थे लेकिन छोड़ दिए जज साहब, इसका आंसर नहीं मिला तो छोड़ दिए इस पॉइंट को। I always keep that in my mind. इसलिए I never leave any ground which you have argued or he has argued. Yes, क्या लिखा है? When this question was put to the SP Siwan as to whether it is the natural conduct of the investigating agency not to seek remand of the accused persons who were absconding so far and have surrendered after the order of this court, the SP Siwan has stated that he will now seek remand of the accused in police custody for interrogation. Full stop. This is about Basantpur PS case number 61 of 2022. Next. As regards Basantpur PS case number 194 of 2012, today the SP Siwan has produced the case diary with some more pages. Full stop. This time page number 19, 226 have been placed in between the pages of the date, pages of the case diary of 10/2/2015 and 6/9/2019. Please stop. These are Xerox copy of the case diary. Please stop. In some of the pages it is written as Mahila PS case number 194 of 2012, whereas in some of the pages it is mentioned as Basantpur PS case number 194 of 2012. Full stop. In some of the cases the date of registration of the case is mentioned as 3/8/2012, whereas पेज 31 पर क्या डेट लिखा है आपने? $17 लिखा है, क्या लिखा है? अच्छा, इस लाइन को छोड़ दीजिए अभी, उस हिस्सों को बाद में। फुल स्टॉप. This court finds that from page number 27 onwards the paragraph number have been changed by adding single inverted comma 1 before the paragraphs which were earlier existing, meaning thereby that paragraph 53, 54 and 55 and so on and so forth have been shown as paragraph 153, 154 and 155 onwards. Full stop. This is not there in the original case diary which has been produced in this court, in the court below. Full stop. When this court called upon SP Siwan to explain as to how can he do so overnight in the carbon copy of the case diary,
and why it should not be taken as an interpolation of the record, comma, SP Sivan submits that it has been done by mistake and he is sorry for that. Full stop. This court will take a view on it on the next date. Next, Learned Counsel for the petitioner is not aware whether the final form submitted in this case has been accepted or not, but he has emphatically stated that the informant was never served with any notice by the learned court below. Therefore, this court calls upon the learned CGM, कहाँ का है? Sivan, to send the entire records of Sivan PS case number 194 of 2012 to this court through a special messenger by Monday, that is 5th of December 2022. Full stop. Next, as regards other cases which finds mention in this court's order, dated 21/9, no sorry, not 21/9, it's order dated 9/11/2022, comma, this court has been informed by learned counsel for the petitioner that in this case has not been mentioned by him in counter affidavit, 164 of 2022. This has not been mentioned. This has not been mentioned. Not been mentioned. उसको काट दिए उस लाइन को. Learned counsel for the petitioner has, as regards other cases, learned counsel for the petitioner has pointed out that in the counter affidavit, the SP Sivan has deliberately not provided information with regard to one more case, that is Basantpur PS case number 164 of 2022, registered under section 120B, 420, 467, 460. धीरे धीरे बोलिए, नोट कर लीजिए. 120B, 420, 467, 468, 471 IPC. IPC. This case was lost on the direction of the learned CGM. This case was lost pursuant to an order passed by learned CGM, Sivan under section 156(3) CRPC. Full stop. It is stated that the case was lost against the accused persons for alleged misappropriation of public money in the name of assistance to the flood victims. Full stop. Huge amounts were, huge public money were swindled away, but the police has submitted a final form saying it to be a case of single-worded mistake of fact. Full stop. At this stage, Mr. Enes Khan, learned SC1, has intervened to explain the court that in those cases, थोड़ा correction होगा उसमें. एक minute. In those cases, the persons
who were not affected by flood and had received the money had returned the money later on. Therefore, the IO submitted a final form saying it to be a case of mistake of fact. Full stop. When this court called upon Mr. Khan to answer as to how, upon return of the public money by someone who had received the same with an intention to unlawfully gain, would take him or them away from the clutches of law, learned standing counsel is not able to satisfy this court. Please stop. This court therefore directs the Superintendent of Police Siwan to immediately go through the records of those cases and take a view whether the case requires further investigation or it would be a fit one for this court to direct the investigation of the case. Full stop. SP Siwan shall apprise this court with his review when the matter will be taken up on the next date. Full stop. बोलिए क्या केस नंबर बता रहे हैं? हुजूर ये जो फाइनल फॉर्म है पीसी एक्ट वाले केस में इसका एफआईआर नंबर है 213-21 दैट इज मेंशन इन दिस। यहाँ डिक्टेशन में दूसरा चला है वो आया है दूसरा केस जो आपने बोला ना 164 को मेंशन नहीं किया है 164 उसमें ये करेक्शन कर दीजिएगा थोड़ा देख लेंगे उसको ड्राफ्ट ऑर्डर में। ये जो केस है ना जिसमें मिस्टेक ऑफ फैक्ट है दैट इज 231 बसंतपुर लकड़ी नवीगंज ओपी पीएस केस नंबर 213 of 2021 under section 406, 408, 409, 420/34 IPC and 164/2022 has been registered on the order of the CGM Siwan under section 156(3) which has not been mentioned in the counter affidavit। ये कौन-कौन से सेक्शन में है? इसमें 120B है, 420 है, 467 है, 468 है, 471 आईपीसी। ये किस चीज का था? एक हाँ है इसका भी है मेरे पास। है ना उसी से रिलेटेड बात हो जाए। पढ़ दूं हुजूर? हाँ पढ़िए क्या है? ये है टेल मी द क्रक्स ऑफ द केस। खुलासा नालिश है कि मैं भगीरथ पंडित उम्र 45 वर्ष पिता स्वर्गीय विश्वनाथ पंडित ग्राम पोस्ट पड़ौली थाना बसंतपुर जिला सिवान का निवासी हूँ। मैं पंचायत राज पड़ौली के वार्ड संख्या 4 के वार्ड सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ हूँ, परंतु स्थानीय मुखिया अजीत कुमार सिंह उम्र 38 वर्ष लगभग पिता स्वर्गीय राजबली सिंह साकिन पड़ौली जो कुख्यात अपराधी प्रवृत्ति के हैं अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग करके अभी तक मेरे वार्ड क्षेत्र से जल नल योजना का कार्य संबंध में मुझे कोई किसी तरह की जानकारी दिए बिना स्वयं अपने स्तर से काम करवाए हैं, जिसमें भारी पैमाने पर गड़बड़ी पर सरकारी पैसे का गबन कर लिया गया है। विदित है कि वार्ड क्षेत्र में जल नल योजना के तहत जल नल योजना का काम वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा कराने का प्रावधान है, परंतु मुखिया श्री सिंह ने सरकारी नियम को चुनौती देते हुए वार्ड सदस्य को प्राप्त अधिकारों का हनन कर मुझे लगातार मानसिक व सामाजिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। वर्ष 2020 में आई बाढ़ के दौरान मेरे वार्ड क्षेत्र में बाढ़ पीड़ित को सहायता राशि दिए जाने के लिए
सूची अनुमोदित किया जाना था। इसके लिए अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष मुखिया थे। मैंने अपने वार्ड क्षेत्र के बाढ़ से प्रभावित 46 परिवारों के प्रधानों के नाम की सूची बनाकर दिया था, परंतु मुखिया श्री सिंह ने मेरे द्वारा दिए गए सूची को हटाकर फर्जी सूची बनाया, जिसमें कई अज्ञात घर के बाहर के लोगों का मेरे वार्ड क्षेत्र का निवासी बताकर 200 व्यक्तियों की सूची बनाकर अनुमोदित किया गया। एक षड्यंत्र पूर्वक पूर्व मुखिया ने सरकारी पैसे का गबन कर लिया। उक्त सूची पर मुखिया ने मेरा जाली हस्ताक्षर किया है। हस्ताक्षर की जांच उचित माध्यम से कराई जा सकती है। मुखिया द्वारा मेरा जाली हस्ताक्षर कर फर्जी सूची बनाए जाने की सूचना 20/9/2020 को मैंने अंचल अधिकारी को दिया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि जालसाज मुखिया के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। उल्लेखनीय है कि इस केस में क्या हुआ 164 में? 164 में ये रजिस्टर्ड है, लेकिन अभी तक कुछ इन्वेस्टिगेशन है। ये सेम केस है जिस तरह का इन्होंने फाइनल फॉर्म पंप किया है। ये दूसरा केस है। उसमें 164 में लिख दीजिएगा बसंतपुर PS केस नंबर 164 of 2022 has been registered at the instance of a ward member of the local area who has made serious allegations against the accused, ये भागीरथ पंडित हैं, who is local mukhia, saying that he has got distributed the money meant for the flood victims to at least 200 those persons who were not eligible for the same. In the process, the accused has forged the signature of the ward member and replaced the list of the victims provided by him by another forged list. Full stop. It is stated that the investigation of this case has been kept pending so far. इसमें रिमांड पर लिया उनको? नहीं सर अभी नहीं। The SP Siwan has informed this court that even though the accused has surrendered in connection with another case, the investigating officer has not sought his remand in this case ऊपर जो लिखा है ना फ्लड विक्टिम्स, वहीं पर लिख देगा he has also complained about the huge swindling of money in the Nal Jal scheme of the ward. Full stop. Next, in the totality of the circumstances, the court finds that Learned Counsel for the petitioner has prima facie satisfied this court that there is a strong political and police nexus involved in this case, and that has resulted in complete injustice to the victims of the crime. Full stop. These cases of swindling of public money require investigation through a specialized agency. Full stop. This court therefore permits and counsel for the petitioner to add the economic offense unit Bihar, एक मिनट रुकिए, and the Anti-Corruption Bureau, which is said to be under the Department of Vigilance, Government of Bihar, to be added as respondent number 4
4 and 5. 4 and 5 respectively in course of the day. Next, client counsel shall serve the copies of the writ application upon Mr. Sinha, learned senior counsel representing EOU, and vigilance में Mr. Arvind Kumar is there, and Mr. Arvind Kumar, learned counsel representing the Department of Vigilance, Government of Bihar in this court. By Monday तक दे देंगे आप? हुजूर. By Monday. That is 5th of December 2022. Full stop. Mr. Khan, learned SC1 shall serve the copy of counter affidavit and supplementary counter affidavit on the learned counsel for the economic offence unit and vigilance, both by the same date. Full stop. List this matter for further consideration on Seventh of December. 8th कर दिया जाएगा. 8th of December 2022. इसमें दो बार submission my two. Yes. First, my lord, there is my lord, my lord gave the direction to the my lord SP my lord Sivan my lord, only 4 cases. That due to my lord he has not mentioned my lord last case my lord 194/22 my lord, and due to that my lord. And second thing my lord, he has given He should have mentioned all the cases. But my lord, I have not given any direction to mention 4 cases only. I only recorded about those cases in which the petitioner, the accused was said to be involved. My humble submission, If he was in position of information as regards other cases, he should have brought it to the notice of the court. Your superintendent of police is acting very casually, and see, this court has recorded its prima facie view in writing. I have given that the court is convinced that it is a case in which there is a nexus between the local political people and police. पुलिस को हटा देते हैं, पुलिस को छोड़ दिया. क्या बात आप करते हैं? I am. And second thing, my lord, I am serious about it. आप इसको casually बोल रहे हैं. My lord, देखिए, SP Sivan shall be present on that day. My lord, second thing, my lord, my humble submission that my lord, he has given, my lord, he has filed a petition before the learned court below, my lord, for taking the remand on 336, my lord, of 2020, my lord. So I have not said anything about that. I have only recorded that in 164 he has not sought remand. In 61 he has not sought remand. And 164 तो मतलब prior to him, my lord, he has. I don't know. देखिए, हिम का मतलब मैं इनको कोई पर्सनली तो कुछ अभी कर नहीं रहा हूँ. कुछ पर्सनली बोला क्या हमने? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैज इन्फॉर्म्ड. आप लोग इतना अटैच क्यों हो जाते हैं? Attached, my lord. I am not attached, but my lord, I have to. This court has not said anything about him personally. I am not going to record a finding that he has done it. Yes, one thing he has done. केस डायरी में जो पैराग्राफ चेंज किया है. About that I have not taken any view till now. I have recorded. ठीक है. जिसने जो कर्म किया होगा वो तो गुड फेथ देखेगा वो. तो ये पेजिंग वाइज गुड फेथ. छोड़िए ना उसको. बाकी जो चीजें हैं उसके ऊपर अभी देखिए. ठीक है. कम ऑन 8th my lord. Yes. Item number 2. Yes. क्रिमिनल रिट एप्लीकेशन है माय लॉर्डशिप, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए और एक्यूज्ड को अरेस्टिंग के लिए. माय लॉर्डशिप 22/1/2021. Your case will be covered by the order. कॉमन ऑर्डर. जी. माय लॉर्डशिप काउंटर एफिडेविट दिखाया जाए हुजूर. बोलिए. काउंटर एफिडेविट का पारा 8 देखा जाए हुजूर. बोलिए. That with regard to the statement made in para 8, 9 and 12 to 17 of the writ application under reply,
it is stated that the case has been supervised by the police inspector Bikramganj and has submitted his report on 19/8/2021, finding the case true against all the accused persons. The police are constantly raiding at the suspected hideouts of the accused persons. I am issuing direction to the SP of कहाँ का है ये? रोहतास. रोहतास. महिला है हुजूर और Take steps अगर ये लोग सरेंडर नहीं करते हैं absconding accused, we will take steps in accordance with law to effect 82-83 process. Petitioner is the wife of informant is the wife of petitioner. I am not concerned with this. हो गया आपको relief जो आप चाह रहे हैं. Heard land counsel for the petitioner and Mr. So-and-so learned AC to this AC to GP4 for this state. Next, by filing this application, petitioner is seeking a direction. Petitioner is seeking the following directions: Para 1, Roman 1, Roman 2, Roman 3, Roman 4. Next, land counsel for the petitioner submits that this petitioner is a poor and helpless lady and she has alleged that her husband, Punpun Pathak, had come at Shivpur, within bracket Naihar of the victim, bracket closed, with some other person upon a bike and attacked on her with a grievous weapon, within bracket Garasa, which caused severe injuries to her. Full stop. In respect of the same, a case being Bikramganj PS case number 23 of 2021 has been registered. Next, Land Council has drawn the attention of this court towards the statements made in paragraph 8 of the counter affidavit filed on behalf of the state, which reads as under quote. Next, Land Council for the state submits that the police is already in search of the accused persons against whom the case has been found true, and in case the accused persons remain absconding, the IU shall take appropriate steps, including 1 to execute process under section 82 and 83 CRPC after obtaining the same from the learned court below. Next, having regard to the stand taken on behalf of the state, this writ application is being disposed of with a direction to the Superintendent of Police, Shasharam, कहाँ है? रोहतास, to issue necessary instructions for arrest of the absconding accused, and in case he does not surrender or is arrested within a reasonable period, the IU must take steps to execute process under section 82 and 83 CRPC after obtaining an appropriate order from the learned court below. Full stop. This application stands disposed of accordingly. Item number 3, Sanjay Parasmani. एक तो केस के लिए इसको कवर कर दिया जाए, ही ऑन लेग्स ये तो कवर्ड है, कवर्ड केस. अच्छा आने दीजिए, एक दो केस के लिए बुला लीजिए उनको. Item number 4, Sanjay Kumar. Yes. Petition has filed for proper investigation in Kataya PS case number 48 of 2022. Covered by the order of this court? Yes, sir.
Covered? लिखिए. This writ application has been filed for a direction to the official respondents to conduct proper investigation of Kataiya PS case number 48 of 2022, registered under section so and so, para 1. Next, Mr. So and so, learned counsel for the petitioner, as well as Mr. So and so, learned AP for the state, jointly submit that the relief spread in this writ application may be taken care of if the supervising authority and the competent court in whose jurisdiction the case is pending act in terms of the directions of this court issued by the order dated 9/9/2022 passed in CRWGC number 153 of 2017 within brackets so and so versus so and so and other analogous cases. Full stop. In the aforesaid view of the matter, this writ application is being disposed of in similar terms. Full stop. The operative part of the order dated 9/9/2022 are produced hereunder. Court. Next, let the Superintendent of Police Gopalganj within bracket respond number 5 and the competent court within whose jurisdiction the case is pending act accordingly. Item number 5. Yes. My lord, fair investigation, my lord, common order, by common order. Yes. Counter भी है दे. Same order. Give the name. Counter क्या investigation pending है? जी चल ही रहा है. दो केस पे केस काउंटर केस. And follow that. Follow that. जी जी. Follow that. जी जी. Same order. नाम दे दीजिए. Counter affidavit be taken on the record. Item number 6. Anuj Dilbar Krishna. Outline. Yes. No one appears for the petitioner to praise this application. Full stop. Petitioner in this case is seeking the following reliefs. Para 1. It appears that over 5 years of period the petitioner has lost interest in this matter and he is no longer interested in pursuing this case. She is no longer interested in pursuing this case, hence this application is dismissed. Item number 7. Naresh Chandra Verma. Yes, Mr. Verma. Yes. Verified the order of the executive magistrate passed in a proceeding under section 145 CRPC. Still the person against whom the order was Why passed. this is under heading for providing security? But the prayer is for issuance of a direction to the respondent to protect the life and property of the petitioner. What is the order of the learned magistrate? My lord, that is, my lord, Annexure 1. Yes. My lord, may kindly see the operative part is at page number 13. Yes. द्वितीय पक्ष अपना दावा सिद्ध करने में असफल रहे. द्वितीय पक्ष अपना दावा सिद्ध करने में असफल रहे हैं, इसलिए उन्हें प्रक्रियागत भूमि पर उन्हें जाने से रोका जाता है. साथ ही उन्हें यह भी आदेश दिया जाता है कि प्रथम पक्ष से संख्या 2 के वास्तविक दखल कब्जा वाली प्रक्रियागत भूमि पर किसी प्रकार का उत्पात या उपद्रव नहीं करेंगे. आदेश की प्रतियां संबंधित अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को भेजें. यह आदेश किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अवैध करार दिए जाने तक वैध रहेगा. Then thereafter, my lord, just after 6 days, when the petitioner tried to clean that land, as there was garbage thrown on the land, just after 6 days, when the laborers went there to clean the land, then the other side, my lord, in the proceedings, they abused the laborers, they snatched their tools, for which the petitioner made a complaint also. The police did nothing, my lord. Then thereafter, again, the petitioner filed an application before the executive magistrate. That is on page number 14, my lord.
Yes. What is the present position? Sir, 2017 matter. 17 matter. 17 matter, and if you have any fresh cause of action, then go and apply for protection. This order still exists. My lord, may I observe? Is there any suit pending against this? No, not in my knowledge. Not in Likhi. Heard Mr. Verma, Mr. Naresh Chandra Verma. Nataraj Verma, my lord. Sorry, Nataraj Verma. My lord. Your name is not here. Mr. Nataraj Verma, learned counsel for the petitioner, and Mr. Saroj Kumar Sharma, learned AC to AG3 for the state. Petitioner in this case is seeking a direction to the respondents to protect his life and property from the hands of antisocial elements. Full stop. Next, Land Council for the petitioner has taken this court through the order dated 12/9/2017, passed in case number M-2529 of 2016 / trial number 72 of 2017 by the executive magistrate within bracket East, Muzaffarpur under section 145 of the Code of Criminal Procedure. Full stop. This court has been shown that by the said order, the second party has been restrained from going on the land in question, and they have been asked not to create any disturbance on the land which is in real possession of the first party. First party number 2. प्रथम पक्ष संख्या 2 के वास्तविक दखल कब्जा. First party number 2. Full stop. Next, in course of hearing, however, Land Council is unable to say as to whether there is any title suit or any other proceeding arising out of the said order is pending in any competent court of law. Full stop. Next, Land Council for the state has submitted that the case is of the year 2017. Therefore, case is of the year 2017. Having regard to the facts and circumstances of the case, in the nature of the submissions made before this court, it would not be safe for this court to proceed on the basis of incomplete information. Full stop. This court would rather grant liberty to the petitioner that in case any fresh cause of action arises, he may bring it to the notice of the jurisdictional police station and the superintendent of police and the senior superintendent of police Muzaffarpur, who will look into the materials placed before him, and in case it is found that there is any need to protect the life and property of the petitioner, appropriate decision shall be taken thereon within a reasonable period. Full stop. This application stands disposed of accordingly. Item number 8. Jan Sankar. लाला शेषेंद्र नारायण, आपका नाम? परमिटेड टू बी विड्रॉन कर दीजिए उसको. सीरियल नंबर क्या था? 8. नहीं, वो तो विड्रॉन वाला क्यू केसेस. आइटम नंबर 9. यस, हुजूर के ऑर्डर से कवर्ड है. कवर्ड है. हाँ, सेम ऑर्डर. सेम.
Item number 10, Ajay Kumar Sharma. Permission to withdraw my lord during pendency of writ appeal. आप इस साइड से चले आए शर्मा जी, बदलते रहते हैं। अच्छी बात है, टाइप नहीं होना चाहिए। कभी कभी साइड बदलते रहने से तो ताजगी बनी रहती है, एक साइड का पहचान नहीं होना चाहिए। ठीक करते हैं। देखिए, एट द आउटसेट मिस्टर अजय कुमार शर्मा, लैंड काउंसिल फॉर the petitioner seeks permission to withdraw this application. Permission is granted, application is dismissed and withdrawn. साइबर क्राइम वाले में कुछ हो रहा है आप लोगों के? हाँ जी हाँ, कुछ पता लग रहा है कि फ्रॉड सब डिटेक्ट हुआ है, नहीं हुआ है? हाँ, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब बोले हैं कि हम बाहर भी गए हैं। वो पता कीजिए उसमें क्या सब चल रहा है बुद्धा कॉलोनी में। For removal of defects, item number 11, under heading for orders on office notes, Kaushal Kishore Mishra. ऑफिस नोट्स में क्या आया है? लिखिए। No one appears for the petitioner. स्टेट का भी नाम नहीं आ रहा है इसमें।